उसका एसी कूलिंग नहीं हो रहा है। तो एसी कूलिंग होने का रीज़न में भी एक हो सकता है कि उसका गैस ख़त्म हो गया, पर अभी वो प्रॉपरली ओपन करेंगे, सर्विस करेंगे और उसके बाद मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि मेरे गाड़ी का एसी क्यों कूलिंग नहीं हो रहा है। पहले बैटरी डिसमेंटल करेंगे। हाँ, डिस्क निकाल देंगे अपन इसका, और फिर अपन आगे अंदर
इधर डाल दे। ओके, इसका एसी का गैस रहता है। वीडियो बंद करो जी। तो गाड़ी चालू करते हैं। गैस फिल कर रहे। जी सर। तो सर अभी क्या कर रही है पानी से? ये जो वाल्व खुले थे ना, हाँ, उसको लीक चेक करें कि वाल्व तो लीकेज तो नहीं है, तो लीक कटा तो नहीं है। वही जहाँ पे सर ने ओपन किया था वहाँ पे चेक करे कि हाँ। इधर लीकेज है कि नहीं। हाँ। वो चेक हो रहा है यहाँ पे। अपन 4 पे रख रहे हैं एसी। एसी का फ्लो एकदम चिल्ड, एसी का हवा आ रहा है। देख रहे हैं 2 पे एसी और एसी का फ्लो देखो कितना अच्छा है। एसी का फुल वर्क हो चुका है और 2 पे एसी रख के भी इतना अच्छा फ्लो आ रहा है एसी का। 4 पे रखते। मैं यहाँ पे रेगुलरली आ रहा हूँ और मुझे ये ट्रस्टेड है, डी कार पर मुझे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पूरे कार का काम यही होता है, तो इसलिए मैं ब्लाइंडली यहाँ पे आता हूँ और मेरा कुछ भी काम रहता है तो मैं यहाँ पे ही करवाता हूँ।